Right? So there has to be place for everyone. There has to be space for everyone. I always believe that had cinema had any kind of an influence on the society, this society would have been a heaven. Because mostly the films that we have made carried great messages and we glorified women, we glorified good family values. But has it changed? No. So cinema or the stories, they take from society and they put it out there on screen, not vice versa. Thank you, thank you, thank you. Please. No, one question, please, the gentleman out here. हाथ तुलते हुए हम चले जाओ, ठीक चले जाओ. मुझे ये पूछना है कि जोरम फिल्म में जिस तरह से आपके बच्चे अपनी फिल्मों में भाषा और संवाद का आप कैसे ध्यान रखते हैं? भाषा और संवाद की जो इस फिल्मों में कमेंट ऐसे आपका शामिल बहुत अच्छा है. आप खुद फिल्म में भाषा और संवाद मुझे भाषा से बहुत प्रेम है, क्योंकि हमारे सारे भाव को हम भाषा के जरिए ही लोगों तक पहुंचाते हैं. अगर प्रेमी प्रेमिका अपनी एक दूसरे की आंखों में देखते रह जाएं 1 साल तक तो कुछ हो नहीं पाएगा. हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ. उच्चारण या डिक्शन जिसको कहते हैं, उसके लिए मुझे कविताओं का बड़ा शौक रहा बचपन से, और मैं दोहा प्रतियोगिता में हिस्सा लेता था. तो उच्चारण को लेकर के हमेशा सही बोलना है. अंग्रेजी सही, अगर अंग्रेजी बोल रहा हूँ तो सही बोलूँ, भोजपुरी बोल रहा हूँ तो सही बोलूँ, हिंदी बोल रहा हूँ तो सही बोलूँ. इस पर बहुत ज़्यादा एक सजग रहा हूँ मैं, और उसको लेकर लगातार प्रयत्न करता रहा. कविताओं ने मुझे भाषा के प्रति मेरे प्रेम को और गहरा किया, उच्चारण के प्रति वो प्रेम और गहरा हुआ. तो कविताएं अगर लोग पढ़ें, और अलग अलग कविताएं चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, उससे आपकी भाषा संवाद आएगी और उच्चारण सारे सही हो जाते हैं. जी, थैंक यू सो मच. One is, like, with the success of several South Indian films like RRR, KGF, the Indian film industry seems to be more inclusive. It is addressing many other language industries. Do you think OTT played any role in making Indian film industry more inclusive? This is my first question. And the second question is, what is your opinion on any kind of censorship, which is not there yet, but there is a copy, etc. What is your idea about, what do you think about censorship on OTT? Okay. He's saying that you're taking all the master class questions. So the OTT has completely democratized the whole industry all across. Now, just 5 minutes back, I was talking about watching Bengali films and Malayalam films and Kannada films. Okay, and even during the pandemic, most of the North Indians are watching, the films from Tamil Nadu, Kerala, and so many stars suddenly sprung up during pandemic itself. So that itself is the testimony or the proof how OTT has helped the entire film industry, coming into one. And RRR and Bahubali and all of these films, so many Pushpa, if they are, they are popular that side, but they are also very much popular in North. Okay. But to add to that, I must tell you, Alu Arjun, Junior NTR, Ram Charan, all of them are very popular in the villages or the small towns of India, North India. You'll ask me how? Because satellite, dubbed films. Because long back,
20 years back, we stopped making films for those masses. And they were not getting to see their heroes. So they found their heroes in these people, in those dubbed films. Okay? It's not that only now that they are, coming to know about these people. They were very popular. These people are very popular. And this was told to me by a journalist from Haryana. So that was an eye-opener for me. And what was your second question? My second question is censorship on OTT. It will be dead. If censorship is If censorship comes on digital media will be dead. Because there is one platform. Yes, people went completely rogue in the beginning with their making. They didn't know what to do with that kind of a freedom. So every second film or series started, going nuts, using abuses and showing sex and violence so much because they didn't know with that what to do with that kind of freedom. But now, if you see, they kind of calming down. Now you will see them being much more responsible in their storytelling and using those things only when it is required for the storytelling. So I think if you don't censor it, people are really intelligent enough to really be sensible when it comes to being a filmmaker or artist. मनोज जी, आपने अभी थोड़ा देर पहले कहा कि बहुत तरह के किस तरह के फिल्म हमें मैटर करता है उससे और आपके हर फिल्म में कोई ना कोई एक मैसेज होता है, समाज के लिए एक आवाज बनते उभरते हैं और यहाँ तक के कभी लगता है कि सरकार के खिलाफ भी बात जाती है। नहीं, मैं कोई सरकार के खिलाफ बात नहीं करता, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं बात करता। वो आवाज जो उठता है वो कहीं ना कहीं सरकार का फेल्यूर है, सिस्टम का फेल्यूर है, जिस तरह का वो आवाज आता है और वो आप हमेशा एक इनोवेटिव क्रिएटिव फिल्म देते हैं। सर इसके पीछे क्या राज है सर, किस तरह से आप फिल्म सिलेक्ट करते हैं? देखिए, हम लोग जागरूक हैं, हम लोग अवेयर सिटीजन्स हैं। हम समाज ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी हो, डेमोक्रेटिक हो, सब लोग साथ में रहें और सबको समान अधिकार मिले। मुझसे लोग पूछते हैं कई बार कि क्या आप फेमिनिस्ट हैं? मैं कहता हूँ मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इक्वालिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। उसके लिए मुझे फेमिनिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा कॉमन सेंस है कि जो आदमी काबिल जितना है उसको उसका हक मिलना चाहिए और समाज में हर आदमी दूसरे के बराबर में हो। ये बड़ी बेसिक सी बात है, इसके लिए कोई इज़्म को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो समाज के जागरूक इंसान हैं, जागरूक अभिनेता हैं और जिन चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करता हूँ वो काम नहीं करता हूँ। ये मेरा चुनाव है ना। अगर कोई दूसरी तरीके के जैसे टू आंसर हर क्वेश्चन, अगर कोई दूसरा अपनी तरीके की फिल्म बनाना चाहता है, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं। शायद मैं नहीं देखूंगा या मैं देखूंगा तो ये भी अपनी उत्सुकता की वजह से देखूंगा भी, तो मेरे अपने सवाल होंगे उस पर, लेकिन मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि तुम ये मत बनाओ, वो गलत हो जाएगा। You have acted in Ikanda Kafi Hai. Do you think that cinema actually sensitized you more towards the violations of child rights, child protection issues? Do you think of that? I used to, ma'am, just for your information, when I was doing theatre in Delhi, I used to work with street children. I used to work with platform children, so I was very much aware about the juvenile rights. Okay, and yes, POSCO is something which has come in the ruling very recently. But yes, the POSCO Act is something I never read about fully, but only to prepare myself for the role, I had to go through it and really understand it in detail. And also so many cases like that, one had to read, before I really started preparing myself for the role. Yeah, sometimes what happens is that when you choose a subject, it actually pushes you to know more about certain things and you educate yourself. Now, how do you look at that? These cases right now, when you read in newspapers Right. About child rights violation cases, It is how happening. do you react to it? No, definitely. But it always broke my heart. It always
makes me very emotional and helpless. Because any kind of crime against a voiceless, because children are voiceless. A 16-year-old girl is voiceless because she is someone who is going to suffer not only when she decides to go approach the court, but also in her society, how she's going to be looked at. So when a 16-year-old girl decides to stand up against it, it requires a lot of courage and support from the family. So that case itself and that film itself gave a lot of insight about that girl who has gone through it, about the victim. And when we are doing it, somewhere you come to understand all of those cases which are happening in the country. So, yes, you are right. You sensitize in actor को बहुत सारे subject भी करते हैं. Okay, the young man. Yes. No, not you. Yes, you are young. No, you are also young, but the younger one. Yes. I would like to ask you one question. Does the film changes the narratives politically? For example, sexism in this area of Chhattisgarh and Jharkhand is very much demonized. But the scheduled tribes and the scheduled castes over there, they have to have certain sort of defense against the approaching capitalists, as you can say. So what do you have views on that? The words you are choosing is telling me about your politics. Okay, so I didn't get your question. I just wanted to ask you, how do you think the films in Indian films change the media narrative of a particular group of people? I would say, I would request you to watch Joram, because it is actually dealing with all the questions that you just asked. I would let the film speak for itself. I would let Joram really answer you in all its entirety in a longer length, because all your questions will be answered there. Manoj, can you just tell me, like, you just told that you're very careful about the scripts that you choose. So is there a process to choosing a script, and how often do you say no to a script? Also, what's the status of Family Man? Because we know you are going now. So I choose them very carefully because I really don't want to do anything which is anyway similar to the roles that I've done in the past. And also it has to excite me. It has to really, going to work every day, requires motivation, encouragement, and that can only come from the roles that you choose. So when the script tells me that this is the one that I'm challenging you to do, to perform me or be part of me, is somewhere out which should be engaging, and I as a reader or audience should relate to it and find it a very, very new and very difficult to do. And what's the status of Family Man? Family Man Season 3 will start shooting by the end of February, and 2025, mid to 2025, it will be ready for all of you guys to watch it. Next. जी, मैं मनोज कुमार सिंह राजस्थान बोल रहा अरे वाह, मेरा ही नाम है। हूँ। ये आपने एक बहुत पहले फिल्म काम की अक्स जो लिख सकते ऐसी फिल्मों का जो फिल्मों में काम करने का जो अनुभव रहा और अभी जो फिल्में काम करती उसमें क्या आप पहले की फिल्म में आज की फिल्म नहीं, वो जो अक्स आपने काम किया हाँ अक्स पे आपने जो काम किया और अभी जो फिल्म कर रहे हैं उसमें आप क्या और फ्रेंड्स अभी जो फर्क क्या फर्क तो काफी है ना सर, रोल की बात कर रहे हैं हाँ या जी, सिर्फ- हाँ आपके जो एक्टिंग जो अनुभव जी बस सारे परफॉर्मेंसेस के अपने अनुभव होते हैं। हाँ अक्स का रोल जो था बहुत डिफिकल्ट रोल था, क्योंकि उसमें मुझे कहा गया था कि बुराई को आपको दर्शाना है। बुराई तो बहुत कुछ होती है, ईवल जो होता है बहुत कुछ होता है। ईवल इतना सुंदर होता है कि आप उसकी तरफ झुकते चले जाते हैं, आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। बुराई सुंदर भी होता है, बुराई में वो सारी अदाएं होती हैं जिसके कारण आप उसकी तरफ भाग के जाते हैं।
और जो अच्छाई है वो इतना बोरिंग होता है कि लोग उससे ऊब जाते हैं। इसीलिए जब श्री अमिताभ बच्चन जी के किरदार के अंदर मेरा किरदार घुसता है तो सडनली जो है उनकी पत्नी उनको बहुत ही ज़्यादा अचंभित, मतलब वो बहुत अचंभित होती हैं एंड बहुत ज़्यादा खुश होने लगती हैं कि मेरा हस्बैंड कैसा था अभी कैसा हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। तो बट उसमें जब आप जाते हो उसका सबसे बड़ा जो मेरी हंसी थी जो उससे मैं दर्शाना चाहता था कि बुराई में बहुत ज़्यादा स्वैग है, बहुत अदाएँ हैं, बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षण है उसमें। लेकिन एक बार आप वहाँ चले गए तो फिर आप वापस नहीं लौट पाओगे, और वो खतरा मैं उसकी हंसी में रखा था। इसीलिए उसकी हंसी मैंने एक भेड़ियों की तरीके से रखी हुई थी कि सब कुछ है बस खतरनाक है। Your question, please. William Shakespeare had once stated that the life of stage and all the actors are players. Right. What module would you choose as an actor between real acting and real acting? Well, I mean, real acting and real acting. That way we are all, I mean, what Shakespeare meant to say is something else actually. We are all given roles to play, and this is what we are doing. If you look at it, then there is only one player, and that is God who is playing us. So, but I think whatever we do in our real life is also a kind of motivator for all the actors. So when two people are talking, actors are observing. When actor is talking to you, don't get fooled. He's observing you. He's not talking to you. Yes, here. Hi, I know उत्तम कुमार का पेपर था। जी। आप एक्टर बने नाते आपको तो बहुत सारा कैरेक्टर आता है, लेकिन उसमें तो हर आर्टिस्ट को अलग सा पसंद होता है। तो उसलिए मैं प्रश्न करती हूँ कि आपको कौन सा कैरेक्टर आ रही है? नेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा आपको टिप्पी मिलता है, लेकिन पॉजिटिव कैरेक्टर में आपको आती है? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, लेकिन ज़्यादातर किरदार जो मुझे मिलते हैं वो सब मेन लीड होता है। वो मेन लीड में वो किरदार नेगेटिव भी होता है, कभी कभी नेगेटिव किरदार के बारे में कहानी होती है, कभी पॉजिटिव का ज़्यादा होता है। लेकिन मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव मैं देखता नहीं हूँ। रोल चैलेंजिंग होना चाहिए, रोल ऐसा होना चाहिए जो मैंने कभी किया नहीं हो और ऐसा कभी किसी ने देखा ना हो, और ऐसा रोल जो जहाँ पर मुझे लगे कि पॉसिबिलिटी बहुत है उस रोल में, उसमें बहुत सारा चीज़ ऐड करने का पॉसिबिलिटी हो, तो ऐसे रोल करता हूँ मैं जो आपको ऑडियंस के लिए एक नया एक्सपीरियंस मैं दे पाऊँ। ऐसे रोल, ऐसे स्क्रिप्ट में हमेशा ढूंढता रहता हूँ। Nowadays I get lot of scripts to read, and all of them are good scripts, believe me. But I say no to it because I am looking for something more than good. You know, where I can take the audience on a ride that they have never experienced before. So that gives a lot of responsibility, right? मनोज भाई बस हो गया, थैंक यू मनोज भाई। 5 मिनट और 6 लास्ट क्वेश्चन। 6 लास्ट। हाँ, मैं आपको टाइमर दे दिया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, यस सर, सक्सेस का मतलब क्या है? नो दो नहीं, हम एक दो नहीं करेंगे, एक। मेरे लिए सक्सेस का मतलब है फ्रीडम टू चूज, जहां पर मैं चुनाव कर पाऊंगा अपना, वही है। क्या बात। सेकंड, मनोज जी, आपने तमिल और तेलुगु फिल्म भी की है, अब इसमें क्या कोई बांग्ला फिल्म भी करेंगे आप? पता है आपको, बंगाली हो सकता है कि मैं ज़्यादा आसान लगे मेरे लिए, तमिल तेलुगु तो ऊपर सर के ऊपर जाता, तो बांग्ला फिल्म अगर कोई बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट आएगी तो क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि ये भोजपुरी के बहुत पास है। इसीलिए नहीं, तो जब होगा तो जरूर करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। डेफिनेटली, it is every director's wish to work with an actor like you. Yes. Manoj and Ricky, do you influence your study or work with directors of work? How you influence? जब हम लोग when we were doing theatre,
So extensively we were watching films by these greats. Okay. So when you are studying and doing research on these greats and watching their films, definitely the actor is getting enriched. How Mr. Ray, dealt with his actors, how he directed them, what kind of expectations he had from his actors, what kind of expectation Melanda had from his actors, how he directed his actors, or Mr. Ritik Khattar. So we used to read or get some information from the people who already worked with these greats. I'm always very curious to meet any actor who's been directed by any of these greats, because I really want to know what are the things that he used to say, what are the things that he used to share with you guys, and how he was on the set with you. So I'm like Mr. Om Puri. Many times I used to ask him, how was Mr. Ray with you, and what kind of direction he used to give to you. Or Sharmila ji, I have worked with her in Gulmohar, okay, and it has done extremely well on OTT. I used to ask her, because she had worked in 3 or 4 films with him, about his direction, about his expectation from the actor. So you are always getting enriched if you're really interested in growing as an actor. Right? No. सर इंडस्ट्री के टाइम सुना गया बार जब आप रिजेक्टेड हुए थे तो एक समय ऐसा भी आया था जब आपको सुसाइडल थॉट भी आए थे, तो फाइट बैक कैसे किया आपने? कुछ समय के लिए आए थे, उन लोगों ने उसको बढ़ा दिया। वो था few seconds के लिए आए थे। Because there was a thing that I could not even think of going back to my village, because that option was never there. I wanted to become an actor, and I did have option B. So option A is something that I worked for and worked very hard. When I got rejected for the first time, for 1 month my friends used to really be with me all the time, because they saw me completely breaking down. It was kind of a nervous breakdown for me. But they took care of me. And after that, there was a workshop announced by a very famous theatre group there, 365 days workshop. And my friends paid. They contributed, and they paid my fees for the workshop, and they pushed me to attend those workshops, and then everything was forgotten. I just had one little thing to ask in this relation. You said that, when you failed, when you couldn't get through, you went through depression. Do you think, as an individual, it's very important to teach how to face failure in schools? Yes, it is very difficult for the young minds. I have gone through it, and I can completely understand what happens to that young mind when they fail. They are actually not failing in their mind. They are actually worried about the expectations of the parents. Most of the time. Because the parents are all the time talking about the studies and the coming, and getting into the ranks, the marks, what they are going to become and how their life will change, and so much pressure. Pressure is coming from the peers. The expectation is coming from the parents. So lesser you talk to your child about your expectation from him, is better for his mental health. मनोज जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है, कोलकाता इंटरनेशनल फेस्टिवल का जो ये 29 साल का कारवां था, ये जो सफर था, आज 29 साल में जाके बंगाल अपने आप को विश्व के दरबार में, जहाँ तक फिल्म की बात है, देख रहा है, या कोशिश हमारी है, इसीलिए ये कैप्शन है वर्ल्ड सिनेमा इन बंगाल एक्सपीडिशन। आप खुद आज इस मंच पे हाजिर हैं, और ये जो सफर है, इसके साथ जुड़ने से कैसा महसूस हो रहा है इस फेस्टिवल को विश्व के दरबार के साथ? I'm honored, sir. I'm honored. This is the first time I have been invited, and I made sure that I come here. And this was not in my itinerary, but the moment I have been conveyed that they want me to be there for the festival. Only thing I said that I can't attend the opening ceremony, but I'll definitely be coming and witnessing this gala affair, which has been going on for
29 years. And slowly, I must say, there are two festivals emerging as the topmost from India: Calcutta International Film Festival and Kerala International Film Festival. Last two questions, yes. Hi, Manoj. This is Kolkata from Z Chobish Ghanta. There are so many people coming from all over the world, and whenever we are asking about Indian films, they are talking about Bollywood and Shah Rukh Khan. All they are talking about. And you just told us that you hate the word Bollywood. Why? Bollywood, I know, because it's as if we are the bad copy of Hollywood. We are not. We are making our original films. You mean to say that Bengali films are taken from Hollywood films? No, we had Satyajit Ray and Mr. Mrinal Singh and Mr. Bhatt. Okay, so I don't know who has given this term to our industry, but this is very demeaning. We are originals. Even our mainstream films are one of a kind. So when they are coming to, they know about Shah Rukh Khan or Amitabh Bachchan or Salman Khan. Look at their films. They chose not to be influenced by Hollywood and their mainstream. Rather, they made their own mainstreams. Okay, so that is why I think we are also known for our mainstream cinema outside, for song and dances, right? So if they are coming to see the shootings of Indian film industry and Indian film stars, why to give that name to us? Because our working style and our values don't match with Hollywood at all. Thank you. Last question. मनोज जी, मैं मीनाक्षी संगरिया सदीरामा से बोल रही हूँ। आपके जो वक्तव्य थी कविता के ऊपर और जो साहित्य को लेके, और साथ में आप जो मिलिट्री की एक्टिंग करते हैं वो बड़ी सुंदर होती है। उसको आप कैसे कर पाते हैं? क्या आप मिलिट्री में रहे हैं? या फिर दो कविता की आपकी एक लाइन? मेरे फादर जो थे वो फार्मर थे, तो मैं मिलिट्री का तो भी मुझे नहीं पता था कि जिंदगी कैसी होती, लेकिन कई बार कंटोनमेंट में जाने का मौका लगा, कई बार सारे सैनिकों से मिलने का मौका लगा, उनके साथ पार्टी करने का। सर, आपके फ्रेंड भी है सारे सैनिक? जी, बहुत। मैं बहुत उनके पास आता जाता हूँ। LOC फिल्म की हुई है मैंने, तो मुझे ये लगा कि ये सब लोग जो हैं इंसान ही होते हैं, उनकी भी ज़रूरतें वही होती है जो इंसानों की होती है, लेकिन जो अफसर होते हैं वो एक खास तरीके का व्यवहार होता है उनका, जो मैं काफ़ी अफसरों में मैंने ऑब्जर्व किया। तो कभी भी मिलिट्री का कोई किरदार, जैसे IRE अगर आप देखेंगे तो उसमें वो कर्नल है, तो कर्नल जो होता है वो हायरार्की में ऊपर होता है बहुत, तो उसका रवैया कैसा होता है, वो कैसे बात करता है अपने मेजर से या कमांडिंग अफसर से, वो कैसे बात करता है अपने सोल्जर से, कैसे बात करता है, एक तरीका है और वो एक प्रोटोकॉल होता है। तो उस प्रोटोकॉल के कारण वो उनके सिस्टम का, उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो जाता है। उसको आप कैसे उसको किरदार तो आपके बड़े जबरदस्त होते हैं, ऐसा लगता है कि आप एकदम मिलिट्री मैन हो और वो उस किरदार को निभा रहे हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हम लोग 2-2 महीने तक 3-3 महीने तक बहुत मेहनत करते हैं, एक अप्रोच लेते हैं और उससे तैयारी करते हैं हम लोग। सारे रोल्स करने का मेथड मेरा अलग होता है, एक डिवाइस अलग मैं इन्वेंट करता हूँ, तो उसी से पॉसिबल हो पाता है। कभी हो सका तो किताब लिखूंगा, हाउ टू अप्रोच परफॉर्मेंस। 2 लाइन अगर सुना दे। मेरी कविता की 2 लाइन, ये बहुत सारे बंगाल के जर्नलिस्ट समझ ही नहीं पाएंगे। नहीं समझ, that would be a lovely lyrical way to end a press conference. थोड़ा अच्छा लगता है। 2 लाइन हो जाए। 2 लाइन। ओके। Your fan. Yeah, thank you, sir. Thank you. Bachchan and KPS. Oh, thank you, sir. Okay. We are Bengali. Silence, please. सबको सुमार को लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे सकेगा।
दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। गर मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, गर मुझे बांध कब सकता है। Thank you so very much. I think this has been one of the loveliest press conference and most organized press conference ever. Thank you to my friends, members of the press. No more hands now. You've lost your chance. Thank you so much. Thank you. Please watch Joram.